Good evening, everyone, and welcome. So we are continuing our live stream from day before yesterday. तो पिछले लाइव स्ट्रीम में हम लोगों ने सीखा था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज के स्ट्रीम में हम लोग इसका एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आता है फाइंडिंग आउट एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, सो विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, so HCF, as we have learned in our previous classes in a sense, जब हम लोग छोटे थे ना, क्लास 4 क्लास 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, या इसको जीसीडी भी बोलते हैं हम लोग। देन वी हैव एलसीएम। एलसीएम इज लोवेस्ट या फिर लीस्ट भी कह सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यही जब सब चीजें जो बचपन में आप लोगों ने सीखा था, उन्हीं चीजों का फिर से एप्लीकेशन इन क्लास 10। Okay, so let's pick up a question. So the book I am using is आर डी शर्मा। ठीक है, तो उसी में से कुछ क्वेश्चंस निकाल लेते हैं करने के लिए। उधर से ओके, सो एक्सरसाइज 1.4 से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं पहले, है ना। लेट मी जस्ट शो द क्वेश्चन। आई होप दिस इज विजिबल। हेलो भूपेंद्र जी, हेलो डॉक्टर लालचंद, गुड इवनिंग एंड वेलकम। स्ट्रीम में आपका स्वागत है। सो आई थिंक नाउ इट इज विजिबल ना। सेटअप थोड़ा छोटा सा है, इसीलिए पूरी बुक में नहीं डाल सकता यहाँ पे। तो लेट्स ट्राई दिस वन। सो क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चंस लगते हैं ना ये सब। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट। ओके, तो ये प्रॉपर्टी पे आएंगे, पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं यूजिंग, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन 2 कर लेते हैं ना पहले, अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये एनसीईआरटी के बुक में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है। अगेन दिस इज द आर डी शर्मा टेक्स्ट बुक। ओके, so I'm taking question number 4 यहाँ का। So I'm not writing down the question, I'm just writing down the values 40, 36 and 126. Okay. So for prime factorization, जैसा कि हम लोग जब छोटे थे तब सिखाया जाता है ना, कि we have to start dividing by the smallest prime number, है ना, and तब तक डिवाइड करते हैं कि जब तक वो उससे डिवाइड ना हो, है ना। Like we will start dividing it by 2. So 40 divided by 2 is 20. Then again सो ये 5 से भी हम लोग डिवाइड करके रख सकते हैं, बट 1 को हम लोग नहीं लेंगे सिंस 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना। देन वी हैव 36। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इन दिस इज 18, ये 9 एंड देन 3 और 3, सो जस्ट 3 से डिवाइड करके रख देंगे एंड देन 126। सो दिस विल बी 63। अच्छा, तो ये अभी 2 से डिविजिबल नहीं है, सो विल डिवाइड इट बाय 3, सो दिस इज 21 एंड देन this is 3 and this is 7 and then 7 से डिवाइड करके रख देंगे। ओके, सो अभी हम लोग
सारे फैक्टर्स को लिखते जाएंगे। 40 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2, 2, 2 और 5। देन 36, 36 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड देन 126 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, सो अभी पहले निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 40, 36 एंड 126। तो बस ये देखना है कि कॉमन क्या क्या है इसमें से, है ना। सो दिस 2, एक 2 का फैक्टर यहाँ है और यहाँ है ना। सो सिंस 2 इज कॉमन फॉर ऑल द थ्री नंबर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। एंड देन और कुछ है क्या, और तो कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ विल बी 2, क्योंकि 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों नंबर्स के फैक्टर हो, है ना। सो एचसीएफ विल बी 2। अभी एलसीएम के लिए क्या करें, एलसीएम ऑफ 40, 36 एंड 126। तो अभी एलसीएम के लिए सो विल राइट कि जैसे कि इसको तो लेना ही है क्योंकि ये तो कॉमन है ही, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान ले कि तीनों नंबर में 2 को छोड़ के और कुछ कॉमन नहीं है ना। सो देन अभी ये देखना है कि ऐसा कोई नंबर है क्या जो किसी दो नंबर के बीच में कॉमन हो, जैसे कि ये वाला 2। तो ये 2 इन दोनों के बीच में कॉमन है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। देन इसका जो 3 है, ये 3 और ये 3 कॉमन है। ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है आप लोगों को, तो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज 3 एंड देन इसको भी 3। ओके, तो अभी बाकी कौन कौन से फैक्टर्स बच गए हैं। सो वी हैव 2, 5 एंड 7। तो इसको भी लिख देना है 2, 5 और 7, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना वैल्यू आता है। सो 5 इंटू 2 तो 10 पहले, पहले 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 7 42, 21, 22, 22, 25। So 2520. Okay, so this is our HCF, highest common factor, and this is the LCM. ठीक है। तो अगेन मैं कहता हूँ कि क्लास 10 के हिसाब से ये चीजें बहुत इजी लगती है ना करने में। तो और एक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, ठीक है। और उसके बाद इफ टाइम परमिट्स थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट वाला ही ले लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने किया दिस वन ना, 40, 36 वन। अभी ये वाला ले लेते हैं 80, 90, 84, 90 एंड 120। ओके, सो 84, 84 को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 2 से डिवाइड करना। सो दिस इज 2, दिस इज 42। 42 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 21। नाउ 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 ऑब्वियसली, सो वी विल डिवाइड इट बाय 3 एंड 7। तो यहाँ तक भी आप लिख के रख सकते हैं, बट मैं और एक बार डिवाइड करता हूँ, बट 1 को नहीं लिखना है, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए। और मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, सो वी अवॉइड 1। नेक्स्ट वी हैव 90। तो 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45। तो 45 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, वी विल गेट 15। देन अगेन डिवाइडेड बाय 3 वी विल गेट 5। बस 5 और 1।
and then 120. This is 30. 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, we will get 15, then 3 and 5. Okay, so 84, 84 को আমি লিখিলাম 84, 2 into 2 into 3 into 7, then 90. 90 is 2 into 3 into 3 into 5, and then 120. 2 into 2 into 2 into 3 into 5. Okay, so HCF of 84, 90 and 120. तो देखते हैं अभी क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है. So ये 2, this 2 is common, ये 2 common है तीनों नंबर में, है ना. And then हाँ, ये 3 को हम लोग ले सकते हैं. अगेन एग्जाम में ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है आप लोगों को, ठीक है. हाँ जी, ACF 6 होगा. फातिमा सादरी वाला, आई होप मैं आपका नाम करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ. तो ACF विल बी 2 into 3 6. ओके, और आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव स्ट्रीम में. ओके, अभी निकालना है हमें LCM. सो LCM के लिए पहले तो ये दो नंबर लिखने ही हैं हमें, 2 into 3. मेरा दिमाग फट रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा. आ जाएगा समझ में, बहुत इजी चीजें हैं. हेलो हेलो सोनू. फातिमा, फातिमा, ओके, शॉर्ट में बोलता हूँ, कोई बात नहीं. ये सब बचपन में ही सीखते हैं अभी हम लोग, है ना, बट क्लास 10 में फिर से ये सब चीजें इंक्लूडेड है. एनीवेज, हाँ जी, बहुत इजी है ना. तो एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए इसी खुशी में. बहुत इजी क्वेश्चन है ना. और चैनल में आई थिंक आप पहली बार आए हैं, क्योंकि आपका नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. एनीवेज, सो 2 and 3 तो लेना ही है. देन अभी देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किन्हीं दो नंबर में कॉमन आते हैं, है ना. सो एक तो ये 2, यहाँ का जो 2 और ये 2, ठीक है. तो इन दोनों को कॉमन लेके हम लोग 2 लिखेंगे. देन हम लोग 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है. सो इन दोनों 5 को मिला के एक 5 कॉमन ले सकते हैं. एंड देन जो बाकी बचा 2, 3 और 7 है, उसको भी लिख देंगे. 2, 3 और 7. नाउ लेट्स फाइंड द LCM. तो 5 2 10 तो ये हो गया. 2 into 3 6, 2 into 3 6, 6 into 6 is 36, 36 into 7 42. और ये तो देखो 2 factors डिवाइस है. So this is also 2520. Okay, ठीक है. So let's move to the next question. तो क्वेश्चन क्या ही करना है, अभी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चंस तो काफी इजी है. So अभी property in a sense, this is the relation between HCF and LCM of two numbers, है ना. So property हमें ये कहता है कि HCF, suppose A और B है, suppose HCF of A and B multiplied by LCM of A and B. So this is equal to A into B. मतलब कि the HCF and LCM का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, so this is equal to the product of the numbers. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि product of the numbers. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करना रहता है. वन मोर क्वेश्चन फॉर होमवर्क, वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. चलिए कोई बात नहीं, मैं बुक सामने रख देता हूँ आपके,
आप अपनी पसंद से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। ओके, दिस इज आर डी शर्मा, क्लास 10। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए पिक। बट आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 छोड़ दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम। आई होप दिस इज विजिबल। Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to the product of the integers। तो पहले तो LCM HCF निकालना है एंड देन हमको वेरीफाई करके भी देखना है। ठीक है, तो कौन सा ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। नंबर 3 ही कर लेते हैं ना, 336 एंड 54। 336। थैंक यू स्ट्रीम को लाइक करने के लिए। सो आई एम नॉट राइटिंग डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये है कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है एंड देन वी नीड टू वेरीफाई। तो 336 एंड 54। सिद्धि खरवे, हेलो सिद्धि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज नए नए लोग मिल रहे हैं स्ट्रीम में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो सिद्धि, बहुत बहुत स्वागत, और आप स्ट्रीम को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो इसका हम लोग एलसीएम और एसीएफ निकालेंगे अभी। प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 into 1, 2 into 6 আৰু 2 into 8 হয়নে, আকৌ 2, 2 into 8 and so 42, 21, 3 और 7। ठीक है, यहाँ तक करके रख सकते हैं। और अगर आप पिछला सम देख चुके हैं तो मैं यूजुअली 7 से डिवाइड कर देता हूँ, बट ठीक है इस बार मतलब कि आई यूजुअली डिवाइड, इसको एक और डिवाइड करके मैं रख देता हूँ, बट ऐसे भी रख सकते हैं आप लोग। इज देयर एनी ट्रिक, इज देयर एन इजी ट्रिक फॉर 4 डिजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, बट हाँ एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए काफी सारा मेथड है। बट सिंस अभी हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली जो क्लास 10 का सिलेबस है उसमें हम लोग डिसाइड मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, उससे कर रहे हैं, तो अभी ट्रिक समझाने का कोई वो देखते हैं किसी दूसरे स्ट्रीम में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, है ना। फिलहाल हम लोग, अगर आप पिछला लाइव स्ट्रीम देखेंगे मेरे परसों का, तो वहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस किया था, तो उसी के बेसिस पे हम लोग ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का तो कुछ वो नहीं है, ट्रिक क्या ही निकालेंगे आप। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है एंड सो ऑन। सो এটা 2 রে করিম, 2 রে করলে 27, then 3 9। वैसे आप क्या करते हैं मैं आई होप मैं नाम आपका करेक्ट ले रहा हूँ ना, फातिमा। आप क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारे इंजीनियर्स जो स्कूल कॉलेज पास कर चुके हैं, वो भी स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाते हैं कभी कभी। सो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो? तो 336 के फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। हाँ, तो मैंने 1 लिख ही दिया, बट 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ओके, एंड देन 54, HCF of 336 into, sorry, and 54।
तो अभी कॉमन देख लेते हैं क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो ये 2 को लिया जा सकता है एंड देन ये 3 को लिया जा सकता है ना। सो ACF विल बी 2 into 3 6. देन LCM। एलसीएम के लिए पहले 2 और 3 लिख देते हैं क्योंकि ये कॉमन है एंड देन जो जो बच गए हैं अभी 2 into 2 into 2 into 7 और into 3 into 3। ओके, सो इसको भी मल्टीप्लाई करना है। सो तीन के दास एक दुई तीन 27 और एक दुई तीन साढ़े 16 16। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 12 13 14 15 16 और 27 6 7 13 प्लस साढ़े और खाते में कोई दो 7 2 14 21 22 28 29 30। Okay, so LCM is 3024. Okay, now we have to verify ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, उसी को हमें अभी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला गया था वेरीफाई दैट। ओके, सो वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन ठीक है, तो पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। 336 इंटू 54। ठीक है, so what is 336 into 54? मतलब 24 12 13 14 और 12 13 और 5 2 29 15 16 17 18 15 16 8 9 10 11। इसको भी कर ही लेते हैं 24 12 13 14 17 18। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है 18,144। Okay, and then ACF into LCM. ACF is 6 into 3024. So this is also 1000, sorry, 18,144. So we can confirm that ACF of 3,336 and 54 is equal to, sorry, LCM of 336 and 54 is equal to 336 into 54। ठीक है, तो यही चीज वेरीफाई करना है हमें। और यू आर इन क्लास 10। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। आई वांट टू बी अ फिजिसिस्ट। आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गिव यू टिप्स, फातिमा। Okay, let's try one more question. सो तीन ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, है ना। तो लेट्स ट्राई दिस वन। अभी हम लोगों ने किया था 336 एंड 54। अभी ये वाला कर लेते हैं 510 एंड 92। ठीक है,
ओके, सो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन. सो टू কিমান হ'ব? 2 5 আৰু 2 5 হয়নে? So 5, 5 plus 5 is 10, 10 plus 2 is 12. So this is divisible by 3. है ना? 3 into 8 is 24 and 3 into 5 is 15. 8 plus 5 is how much? 13. 13 is not divisible by 3. So we have to divide it by 5. So pass and pass. 17. So 17 itself is a prime number. 92. अभी 92 का करेंगे. 2 4 और 2 6 और 2 रख ले. 2 2 3. Okay, 23 equal. So 23 is a prime number. तो यहीं पे रोक देना होगा. 510. 510 is 2 3 5 17. 92 is 2 into 2 into 23. तो HCF निकाल लेंगे. तो HCF बहुत ही इजी है, 2 होगा, है ना? ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन फैक्टर है. लेट मी मार्क इट विद द पेंसिल. ओके, सो 2. पर एलसीएम के लिए अभी बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करने होंगे, कि कॉमन एक बचा है, तो जो कॉमन नहीं है वो काफी सारे हो गए ना अभी. तो 2 पेंसिल के, तो 2. तो यहाँ पे है 3 5 एंड 17. तो 3 5 एंड 17, 2 और 23. सो यूजुअली मैं क्या करता हूँ ना, जब भी मुझे 5 और 2 दिख जाता है ना, मैं इसको रख देता हूँ, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होगा. तो जो भी बाकी मल्टीप्लाई करके आएंगे, पीछे एक जीरो लगा देना है. तो मैं यूजुअली वैसे करता हूँ. सो अभी फिलहाल 23 और 17 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. और नहीं तो वी कैन डू वन थिंग. 5 दुगुन 10. सो 23 इंटू 2 इज 46, है ना? एंड 17 इंटू 3 इज 51. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज 6 and this is 4. 5 into 6 is 30. 24 25 26 27. 2746 ना क्या पता होगा से नहीं. 20 21 22 23. so this is 2346. 2346 मतलब कि this will be 2000 23,460. शुभम ऑफिशियल, हेलो हेलो. बहुत बहुत स्वागत शुभम ऑफिशियल 0489. कैसे हैं शुभम? Sir, you should also look for competency-based question, as CBSE is increasing their level. So NCERT is not enough, and I think it is a waste of time. What do you think? What do you think? I should do the NCERT? Yes, I mean that is a really tricky questions, because see the schools what they do, they will prescribe you the NCERT textbook. Okay, they will never tell you ki go for this book or go for that book. Okay, but yes, I mean I'm from Assam, and the state boards this year the state board is also going to revise the class 9 and class 10 syllabus. Okay, but I don't think NCERT is a waste. Okay, first of all, because the concepts are very nicely and very, I mean, what should I say? They are explained in very simple words. Okay, so it's not that it is a complete waste, but yes, for practice, you have to refer to other books. Okay, so that is a क्या कहें मैं being a teacher I can't take side no. But yes, NCRT is, I mean, there are very few questions to practice in NCRT. I mean, let's be honest. I mean, in the this particular exercise, there are three questions in the NCRT textbook. So, do you think the class 10 student should practice three questions? No, this is not sufficient. So, you have to go for reference books and all.
Okay, that's my viewpoint. Hmm, I may be wrong. Anyway, so this is our ACF and LCM. So अभी हमें करना है verify, है ना? Verification. But Fatima, I will take it as a very nice and positive feedback. I will try to include these type of questions in my live stream. Okay. Last year, I referred to R.D. Sharma and this one NCERT exemplar. मैं NCERT टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन कराता ही नहीं हूँ वो लाइव स्ट्रीम में. दिस ईयर लेट्स सी क्या करें. अभी ये इस एकेडमिक सेशन का दूसरा लाइव स्ट्रीम है. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. Okay, so we have to multiply 510 into 92. उस साइड में थोड़ा do और दो से फिर 9 और 9 into 5 is 45. तो 46920 and then the HCF is 2 and the LCM is 23,460. So this is also 46,920. So therefore we can confirm that the product of HCF of 510 and 92 and the an LCM of 510 and 92 is equal to the product of the numbers 510 and 92. ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसे इसको ऐसे ही करना होता है. आई विल प्रैक्टिस एनसीईआरटी एंड डू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. दैट डिपेंड्स हाउ मच डिड यू गेट इन क्लास 9. जस्ट आस्किंग. हाउ मच डिड यू स्कोर फातिमा in class 9? ओके, सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं. द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145 and their LCM is 2175. If one number is 725, find the other. तो इसमें ऑब्वियसली हमें वो प्रॉपर्टी ही यूज करना होगा. I got 70 out of 80 in maths and got 95 out of 100 in my favorite subject. I got 70 out of 80 in maths and got 95 out of 100. My favorite subject is maths and physics. That's great. That's great. So you can easily score 100 out of 100. If you can get 70 out of 80, you can obviously get 80 out of 80, na? So बस आपको एक चीज देखना है कि see you will know it better ना. Why did you get 70? आपका 10 मार्क कहाँ रह गया था, है ना? तो उस चीज को you have to just go back few months, है ना? एग्जाम कैसा हुआ था, कौन से क्वेश्चंस क्यों गए थे, टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ था, और व्हाट एवर वाज द रीजन,
यू हैव टू फर्स्ट फिगर दैट आउट, है ना? अगर आपको प्रॉब्लम, इफ यू आर नोटिसिंग अ प्रॉब्लम, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट हाउ you are going to rectify that. Okay, if you can get 70 out of 80, you can get full marks, that's for sure. Okay. um, ठीक है, so we'll write the property HCF, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, we know that HCF into LCM is equal to product of two numbers. तो यहाँ पे अदर नंबर मतलब कि दो नंबर में से एक नंबर नहीं है ना, so we'll write let one of the number, कुछ भी ले लीजिए, I am taking x. Okay, so HCF into LCM, so HCF is 145, 145, therefore 145 into LCM is 2175 is equal to x into 725. Okay, so for finding x, these are very easy questions. मतलब कि ये कराते हुए भी अजीब लगता है क्लास 10 के बच्चों को ना, 725. सो এটা ডিভাইড কৰিলে হ'ল আৰু, তো 145 আছে, 145 into 5, 5, 25, 20, 21, 22. So 145 into 5 is 725 है ना, so then we divide, 5 into 4 is 20, 5 into 3 is 15, 5 into 5 is, therefore the other number, okay. Oh, even I'm not good in MCQ and assertion. This process that. अच्छा. हाँ, MCQ, I mean troubles a lot. मेरे भी यहाँ पे स्टूडेंट्स दे, आई मीन आई डोंट नो व्हाट आपका क्या प्रॉब्लम है एमसीक्यू में, बट फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स, वो एमसीक्यू के चक्कर में ना दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर, एमसीक्यू में ही लगे रहते हैं ना, दैट्स अनदर इशू. हाँ, एसर्शन में क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं सर, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, तो क्या दोनों सही है या एक सही है या एक गलत है, और द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉर दैट योर कॉन्सेप्ट्स हैव टू बी एब्सोल्यूट, एकदम बहुत बढ़िया होना चाहिए कॉन्सेप्ट. ठीक है. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम योर मैसेजेस, Fatma. I will try to include these type of questions as well in my live stream. आज तो खैर I will just wrap up the stream, but in the coming days I will definitely keep your suggestions in mind. I mean, not you are not giving me suggestions, but I am taking up. You may not realize, but you have given me a lot of suggestions today, Fatma. So thank you. Anyway, so आज का स्ट्रीम हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे. We'll continue this part in tomorrow's live stream as well. ठीक है. So how many? I can see 3 likes. Okay, so जिन्होंने भी लाइक किया है सो बहुत बहुत धन्यवाद. And I can still see 3 people in the live stream. So thank you for remaining. आप इतनी देर तक जुड़े रहे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. 5 पीपल हो गए. ओके, दैट्स ग्रेट. एंड थैंक यू फातिमा फॉर ज्वाइनिंग, शुभम ऑफिशियल फॉर ज्वाइनिंग, और जिन्होंने जिन्होंने आज ज्वाइन किया स्ट्रीम में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद. सो विल ज्वाइन टुमारो. ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय.